Assalamu alaikum guys, this is Umar Altaf and with me it's like always it's Salman Mustafa Basir and today we have Sir Rehan Rehman. Hello everyone, how are you? As promised, we are here with a new subject and a new expert today. So Sir Rehan, what do you teach? Just tell the audience. I teach how to read people's minds according to most of the people that exist and who want to study psychology, but it's a more complex field than that. I sometimes get nervous around you because I think you can. I would like people to assume that I can read their minds then. अच्छा सर रेहान, पहला सवाल मेरा आपसे ये है कि अक्सर लोगों से ये सुनने को मिला है कि साइकोलॉजी ले रहे हो. अच्छा, एक तो लोग सबसे पहले जी साइकोलॉजी को शॉर्ट फॉर्म में साइको बोलते हैं. बिल्कुल. तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? एक लेबल बन गया अनफॉर्चुनेटली. एक तो फील्ड का नाम ही साइकोलॉजी है, तो साइको करके दूसरी बात ये कि लोग कहते हैं कि आपके बाल भी गिर जाते हैं जब आप पढ़ाते हो साइकोलॉजी या बहुत पढ़ते हो तो एक दूसरा भी मिथ है. आपको देखकर यकीन शायद आ जाता है. मुझे लग रहा है ऐसे कुछ कोरिलेशन तो चल रहा है यहाँ पे, बट एक स्टिग्मा, एक सोशल स्टीरियोटाइप आप समझ लो इसको. एंड इट्स नॉट अ फील्ड ओनली रिगार्डिंग एबनॉर्मेलिटी या मेंटल हेल्थ, इट्स मोर वेरिड देन दैट. आजकल साइकोलॉजी काफ़ी हद तक फैल गया इनटू डिफरेंट फील्ड्स, उसकी एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा है. And I think that's very important for students who are interested in this. I think modern तो कोई भी social science ऐसी नहीं है जो कि जिसकी सारी modern development psychology पे based नहीं है, चाहे वो economics है. I can see that most of the modern behavioral economics is based on psychology. In fact, most of the economics right now, microeconomics is based on psychology. Definitely. So, but the A-level psychology, which areas does it cover? I mean, is organization psychology, or how does it work? So initially in AS level you would be studying a range of different things. आपको शुरुआत होती है आपकी research method से. Everything around us in today's world is data. So how do we collect data? And that's not really psychology. वो तो आप समझे हमारी किस्मत है कि हम पढ़ाते हो बच्चों को. हमारी फील्ड में एग्जामिनर्स ने चुना है कि रिसर्च मेथड्स आप पढ़ाओ. थोड़ा बहुत लोग सोशियोलॉजी में भी ये सीखते हैं, बट दिस इज़ अ थिंग दैट कैन बी अप्लाइड टू एनी आई वुड से फील्ड, वेदर यू टेक बिजनेस स्टडीज, वेदर यू टेक साइंसेज, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और एनी अदर फील्ड. It is data. We are surrounded by data in today's world. तो आप शुरू करते हो how to collect data, how to analyze data, how to measure it, what are the pros and cons. Once you have collected that information on how to analyze things, then you apply it to different concepts. So you study about social psychology, right? So why would I help you right now? Or why would you help me right now? What's the cost benefit analysis that people do when they are making decisions? Something like that, right? We would study about obedience. If Sir Salman tells me right now कि आप किसी को कोई चीज़ करो, for example, right, चोरी करो, would I listen to Sir Salman, and why would I listen to him, or why wouldn't I listen to him? Hitler के बारे में बात होती है, right? Obedience. That's how it's linked based on what people told him. I mean, like what he instructed people to do. Why would they even be killing others people? Seems to be interesting. अच्छा सर, मेरा एक सवाल आपसे ये है कि ये सवाल वो है जो लोगों का सवाल है, मेरा नहीं है, कि सर साइकोलॉजी अगर हमें पढ़ना हो, ए लेवल्स में ऑप्ट करना हो, तो उसके साथ सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या बनेगा? नंबर 1. नंबर 2, क्या ये सिर्फ साइंस स्टूडेंट कर सकता है या इसको कॉमर्स का स्टूडेंट भी कर सकता है? तो इसका क्या आप जवाब देते हैं? कोई आपको सब्जेक्ट पर कॉम्बिनेशन पर्टिकुलरली आपको कोई प्री रेक्विजिट की ज़रूरत नहीं है. स्टूडेंट कैन ऑप्ट फॉर साइकोलॉजी विद एनी सब्जेक्ट, चाहे वो कॉमर्स का हो, साइंसेस का हो, सोशल साइंसेज हो. यू कैन हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सब्जेक्ट्स. इट डजंट रियली मैटर. एंड इन टर्म्स ऑफ स्किल सेट्स, यू नीड डिसेंट इंग्लिश लैंग्वेज स्किल्स. इट्स नॉट लाइक आपकी अंग्रेजी बहुत ही कोई नेक्स्ट लेवल होनी चाहिए या बहुत कॉम्प्लिकेटेड वर्ड्स आपको यूज़ करने. थोड़ी बहुत एनालिसिस, कॉम्प्रीहेंशन स्किल्स चाहिए जो आपको यूजुअली ओ लेवल्स में आपको वैसे ही सिखाया जाता है. पूरी ज़िंदगी आप पढ़ते आ रहे हो इंग्लिश लैंग्वेज. सो इट्स नॉट दैट मच ऑफ अ कॉम्प्लिकेशन. वो एक बच्चों के दिमाग में एक डर भी होता है, खौफ भी होता है कि हमारी अंग्रेज़ी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए. अच्छा, ये जो आपने शुरू में बात की कि द फर्स्ट पार्ट ऑफ इट, एंड आई गैदर्ड कि इट्स अ बिग चंक ऑफ द सिलेबस दैट इज़ अबाउट डेटा. सो does it mean that students of psychology they need to have a good ground for mathematics also? Not really. I mean, at least at A levels, there will be some concepts of data analysis, but it's something that they cover from O levels anyways. Very basic. स्टैट्स की जो है, जो स्टैट्स भी नहीं, पाकिस्तान स्टडीज में ये चीज़ पढ़ाई जाती है. ग्राफ, पॉपुलेशन, वाटर लॉगिंग वाले जो ग्राफ्स होते हैं बच्चों के, जो उनको सबसे फेवरेट चैप्टर पॉपुलेशन, तो आपको वैसे ही पता है.
सही है। तो वो चीज़ें होती है अक्सर जो एग्जामिनर्स टैप इनटू कि भाई आपको ग्राफ दे दिया, ज़रा इंटरप्रेट करो। इंटरेस्टिंग थिंग्स, वेरी एप्लीकेबल। स्टूडेंट इज स्टडिंग इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडीज़, उनको भी ऐसी केसेस सिनेरियोज मिलते हैं, उनको भी ये पता होता है। साइंसेज वाला बच्चा भी कर सकता है ये। एंड एनी कॉम्बिनेशन लाइक स्किल सेट्स कोई भी जो चाहिए। ये है जैसे साइंसेस का स्टूडेंट है, मेडिसिन पढ़ रहा है, साथ में वो साइकोलॉजी लेता है, सो इट इज़ जस्ट वन मोर स्टार, और इट के भाई आई हैव वन मोर ग्रेड, आई हैव सोशल साइंस, और डज इट हेल्प यू इन इन योर स्टडीज? It would definitely help students who are pursuing the medical sciences because one component of their medical degree throughout the 5 years would be psychiatry के कोई components आएंगे, and that is what you would study in A2 psychology a bit, not always. Students have the option, so I don't want to scare students with the idea कि आपको बस hardcore psychiatry ही पढ़नी है। A2 के अंदर you have a lot of choices and you can specialize. अच्छा, ये भी आप एक differentiate कर दो, the difference between a psychologist and a psychiatrist. Perfect. I'm glad you asked me that question, Sir Salman. A psychologist is someone who is helping, and a clinical psychologist in this case, because psychologists तो अलग किस्म के होते हैं. So a clinical psychologist is someone who is going to help people's mental health needs, but by recommending therapy in terms of talk therapy, psychotherapy, cognitive behavioral therapy जैसे हम कहते हैं. A psychiatrist, on the other hand, is someone who has studied MBBS, is actually an MD, a doctor of medicine, and specializes in psychiatry during their residency. जैसे लोग cardiology में जाते हैं, pediatricians बनते हैं, तो ऐसे psychiatry में लोग जाते हैं. In that case, you can prescribe medications then. So, sir, for being a clinical psychologist, we don't need biology, right? Not at all. And the biology that you need to know, you would be studying at the undergraduate level. कोई prerequisites जैसे मैंने कहा, ना आपको O levels में चाहिए, ना आपको A levels में चाहिए. अच्छा, ये सवाल मैंने इस वजह से भी पूछा है कि अक्सर मैं बहुत सारे इंटरव्यूज़ दे रहा होता हूँ फॉर एडमिशन्स एंड ऑल, सो देर आर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स जो साइंस के अंदर होते हैं, एंड देन व्हाट दे डू इज़ दैट व्हेन दे कम टू ए लेवल्स दे ड्रॉप फिजिक्स एंड केमिस्ट्री एंड दे टेक बायोलॉजी एंड दे टेक साइकोलॉजी एंड दे टेक सोशियोलॉजी. सो व्हाट डू यू से अबाउट दिस टाइप ऑफ अ कॉम्बिनेशन? It's actually a very interesting combination in my opinion. Biology and psychology will complement each other. But it's not like you can't do psychology if you don't take biology. Exactly. वो complement करता है, आपके skill sets को add करेगा. And again, like I'm saying, it's specializations, right? Psychology is a very vast field. आप किस चीज़ में specialize करते हो, that's what matters. So let's say, for example, if you have Sir Omar who loves biology today, right? He can get into, more of the neuroscience part if he chooses to opt for it. Sir Salman is more into the marketing type, he's more into business, so he can take up organizational psychology, consumer psychology, how we make choices when we buy products, marketing kaise aap like you can stimulate people's minds to attract their attention. So it's a very, very broad field, and you can take subjects that complement your interests, or that can even contrast your interests, because you might be like aapko aaj padhna hai. I see students who take psychology and sociology together. And this I don't know where this comes from, but they have this understanding that these two subjects will complement. Yes. There's some overlapping content there. Is exactly. it true? There is some overlap, especially like I said, the research methods part. Sociology में थोड़ा बहुत पढ़ाया जाता है, psychology में थोड़ा सा और detail में हम जाते हैं, technicalities में जाते हैं. Overlap से, but they are different subjects, because sociology is the study of societies, culture वगैरह. आप पे थोड़ी बहुत anthropology भी आ जाती है, at least in their syllabus. And in psychology, it's more about the study of the mind, and it's more of a scientific approach to study. Okay, sir. इसकी यूनिवर्सिटीज़ कराची में, पाकिस्तान में कौन सी अच्छी हैं, एंड अब्रॉड कौन सी यूनिवर्सिटीज़ के लिए जाना चाहिए? व्हाट डू यू सजेस्ट? If you are in Pakistan and you want to pursue, इसके आप कराची में बहरिया यूनिवर्सिटी is very good for psychology. You have Karachi University. आपके ज़ियाउद्दीन ने अभी programs निकाले for different types of psychology. CBM में भी एक program है called Psychology and Business for people who are interested in combining the two fields. You have NUST in Islamabad, Lahore में Beacon House National University, and there are some other universities in Punjab as well that offer psychology. IBA in Karachi will offer a social sciences degree with a major in psychology. Wow. So it's not just a pure psychology degree. You will be combining different fields. What is the ETA for that? When is it expected? It's already running. It's up and running. In fact, they have already had students who graduated from the program, and they are pursuing different fields. सर, आपने कहाँ से पढ़ा? ये भी बता दें ऑडियंस को.
मैंने अपना जो मास्टर्स है वो मैंने कोलंबिया यूनिवर्सिटी इन द सिटी ऑफ न्यूयॉर्क से पढ़ा है, और मेरा जो रिसर्च कंपोनेंट था इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एंड द न्यूयॉर्क स्टेट साइकियाट्रिक इंस्टीट्यूट. Perfect. Acha, ek one last thing, if you want to comment on it, the employability of a psychologist. Where, I mean, if a student right now in O levels is thinking about psychology, which field are they looking at in terms of where will they get employed? So like I said, the first thing that comes to every student's mind is psychology means clinical psychologist, right? And उनकी दुनिया वहाँ शुरू होती है वहाँ ख़त्म हो जाती है. But like I'm saying, throughout this entire discussion, it's a very broad field. Yes, in certain fields employability is higher compared to others, like let's say clinical psychologists, या अगर आप organizational behavior learning में जाते हो, and पाकिस्तान के अंदर भी scope बढ़ रहा है. But like I tell my own students in class that you can't be mediocre. You have to be great at what you do, and that applies to any field, but in psychology particularly, you have to make your inlets, you have to make your crossroads, be great at what you do, and things will automatically come to you that way. That is some a very good advice. Be great at what you do. Exactly. So आज आप end करते हैं सर. Sir, नहीं sir. Sir. आपका Okay guys. promise matter So करता as promised before, we were here today with psychology and Sir Rehan. So, and hope to see you in the future with some new subjects and with some new subject experts. So just subscribe our channel and keep watching. Thank you for all the things. Jazakallah. Thank you very much. Thank you.